Hello children, welcome to the Maths Recap module. So in this week, we have done chapter data handling, that means to collect information, and fraction, which means to divide into equal parts. Okay, so here we go with the video. Just watch the video, after that we will start. Introduction. Friends, I'm fond of collecting coins. I have my piggy bank filled with lots of coins. Today we'll do something interesting. We will collect information of total number of 1, 2 and 5 rupee coins present in this piggy bank. We have 3 1 rupee coins, 5 2 rupees coins and 10 5 rupees coins. Wow! That's a lot of money. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to collect information of different things from the group. Answer the questions based on the group. Have you played this game before? Yes, it's the snake and ladder game. We will count the number of snakes and ladders seen on this board. Count with me. First, let us count and write the total number of snakes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 snakes. Now we count the total number of ladders. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 ladders. How many dice do you see here? There are 2 dice. Today we all friends are planning to play cricket. Meet my friends, Ricky, Maria, Maddie and Minty. Let us play a game with their names first. How many names end with the same alphabet Y? 3 names end with the same alphabet Y. Ricky, Maddie and Minty. And how many names start with the same alphabet? Name the alphabet. Yes, 3 names. Maria, Maddie and Minty begin with same alphabet M. Look at these balls on the billiard table. Count and click the total number of red balls and blue balls on the table. Look at the diagram that shows the arrangement of computers in your computer school. Look at the plan and then answer the questions that follow. How many computers are there in the room 1? There are 9 computers in room 1. How many computers are there in the room 2? There are 3 computers in room 2. How many total computers are present in school? There are total 12 computers in the school. It's so pleasant morning. Look at the birds near the branch of tree. We will now find the data of birds from this tree. There are 2 birds which are flying and 5 birds which are sitting on the tree. Observe summary. Let us summarize what we have learned. We can count the number of different objects in a group. We can write the total number of objects in a group. Have you all seen the video? Yes. Was it worthful? Yes. So, have you understood the meaning of data handling? Very good. To collect information. So, chapter 11, handling data. Learning objective means what we are going to learn in this chapter. Show numbers as pictures in a pictograph. Now, here they are showing pictures. It means they are showing with the help of pictograph. This is called pictograph. Answers questions about the data shown on a pictograph. So here they have given the data.
इट कैन बी लाइक स्टेशनरी, इट कैन बी लाइक ड्रेसेस, कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर, बुक्स, नोटबुक्स, crayons, pencil boxes, anything. First they will give the pictures and we have to find out the information. We have to collect the data hiding in this, behind this pictograph. Okay, so here is a warm up. Suman bought these fruits. So Suman has bought these fruits. Okay, some fruit like pineapple, apple, pear, mango. These fruits she has bought. Now we have to find out, count each fruit and fill in the table. We have to find out the number of each fruit and we had to write down the numbers here. First they are asking about apple. So we have to count the number of apples like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how many are apples? Apples are 8. After that we have to count pineapple. 1, 2, 3, 4. How many are pineapples? 4. So we have written here 4. Pear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pear are 6. Now we have to find out the numbers of mango. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so mangoes are 5. Now they are asking how many fruits did सुमन बाय इन ऑल. अब सुमन ने ऑल टुगेदर फ्रूट्स कितने परचेज किए? फर्स्ट वी कैन ऐड दीज नंबर्स लाइक 6 + 4 10, 10 + 8 18 + 5 that is 23. So here we can write 23, or you can count all these fruits all together, so then also you will get the number of fruits. Understood? Handling data means we have to find out the information. Okay, write in the asked data. जो भी क्वेश्चन पूछते हैं फिर उसमें फिल करना होता है. Now next page, pictograph. The students of class 2A collect different things as a hobby. अब उनकी हॉबी थी बहुत डिफरेंट चीजें कलेक्ट करना. Things means चीजें. So 12 students collected stamps. Okay, 10 students collected stickers, 5 students collected feathers, 8 students collected coins. Okay, so they collected, everybody's hobby is different. Like your hobby may be dancing, and some hobbies reading books. Okay, some hobbies to playing cricket, like different games. So hobbies is different of everybody, like hobbies differ. ब्रदर सिस्टर की हॉबी भी अलग होती है, मदर फादर की भी अलग होती है, सबकी एक अपनी हॉबी होती है. हॉबी मीन्स जो हमें फ्री टाइम में करना अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड हॉबी. सो क्लास 2A के स्टूडेंट्स से उनकी हॉबी थी टू कलेक्ट द थिंग्स. सो दे कलेक्टेड स्टैम्प, स्टिकर्स, फेदर्स, कॉइन्स. द टीचर डिसाइडेड टू ड्रॉ पिक्चर्स to show the number of students who collect different items. अब टीचर ने डिसाइड किया पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए. तो व्हाट पिक्चर शी डिसाइडेड टू मेक स्माइली फॉर एवरीथिंग, फॉर ईच एंड एवरीथिंग. लाइक फॉर स्टैम्प्स, हाउ मेनी स्टैम्प्स? 12. तो शी ड्रू हियर 12 स्माइलीज. 10 स्टिकर्स, तो शी ड्रॉ 10 स्माइलीज. फेदर्स, 5 स्माइलीज. कॉइन्स, 8 कॉइन्स है, तो शी ड्रू हेयर 8 स्माइलीज. तो उसने थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्माइलीज बनाई. तो स्माइलीज आर रिप्रेजेंटिंग थिंग्स. नाउ लुक एट पिक्चर एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो हेयर इन्होंने पिक्टोग्राफ बना दिया. दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ की पिक्चर से हमें चीजें शो कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन. व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क. विच आइटम वॉज कलेक्टेड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट. मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा. सो सबसे ज्यादा क्या चीज ली है बच्चों ने? चेक. यस, स्टैम्प्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Stickers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो स्टिकर्स 10 हैं, स्टैम्प्स 12 हैं, फेदर्स 5 हैं एंड कॉइन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो सबसे ज्यादा क्या है, किस चीज का नंबर ज्यादा है? स्टैम्प्स का. सो वी विल राइट हियर स्टैम्प्स. विच आइटम वॉज कलेक्टेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सबसे कम, लीस्ट मतलब कम. सो सबसे कम नंबर किसका है? फेदर्स का. सो वी विल राइट हियर फेदर्स. अंडरस्टूड? So what the teacher made is known as pictograph. ये जो टीचर ने बताया, as I already told you, this is called pictograph. A pictograph represent numbers as pictures. Pictograph जो होता है, हमें जो numbers होता है वो pictures के थ्रू बताते हैं. Understood? Now move. Exercise 1. Look at the pictograph, then circle the correct answer. Here they have given the pictures of apples, mango, oranges and bananas. Let's see what they are asking. Which is the most popular fruit? अब सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रूट कौन सा है? सी, कौन सा ज्यादा लग रहा है हमें? Yes, apple. So we will circle apples. Which is the least? सबसे कम. वो तो हमें ऐसे भी दिख जाता है अगर हम काउंट नहीं करें. Yes, तो banana. We will circle banana. How many mangoes were sold? Mangoes कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 को सर्कल कर देंगे. How many oranges were sold? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oranges were sold. तो we will circle 6. Okay. How many more apples than mangoes were sold? अब एप्पल मैंगो से कितने ज्यादा हुए? सेल. सी, एप्पल तो ज्यादा हुए और मैंगोस उससे कम. तो हमें काउंट करना है कितने. हाउ मेनी मीन्स कितने. सो फर्स्ट वी विल काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 एप्पल्स. 1, 2, 3, 4, 5. 5 मैंगोस. सो हाउ मेनी कैसे पता चलेगा? 7 minus 5 दैट इज 2. सो मैंगो, एप्पल जो मैंगो से 2 ज्यादा सेल हुए. ओके, इट इज वेरी इजी. हम काउंट एंड राइट करते थे ना पिक्चर, इट इज सेम. बस हमें यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना है. नाउ दिस इज फॉर योर होमवर्क. ओके, एंड दिस इज मैथमेटिक्स. ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. It is also very easy. Here they have given the question with the information like to collect 10 packets of biscuit, 7 packets of chips, 5 packets of cashew, 8 packets of peanuts. Okay. So here we have to show these numbers by drawing bag. This bag will represent these numbers. Okay. Now we will do next chapter.
Now, our next chapter is the concept of fraction, that is chapter 12. So, fraction means to divide the thing into equal parts. Divide the whole into equal. Okay? Show fractions half, 1/3, 1/4, 1/4 on a given shape. Okay? Square, circle, कोई भी shape हो सकती है. So, here we will start with the warm-up exercise. Take an apple, divide the apple into half. So half करेंगे तो वो ऐसे divide हो जाएगा. So each part is called half. इस part को क्या बोलते हैं? Half. Okay, if we will divide this apple from here, it will not called half. ये half नहीं हुआ. Okay, वो इसका some part है, but actually it is not half. Half वो यहीं से होगा अगर हम center से उसको आधा करेंगे. Half means आधा. Why you divide something into equal parts, each part is called half. Okay, जब हम उसको 2 equal part में divide करते हैं, उसका each part क्या कहलाता है? Half. Half means 1 out of 2 equal part. It is written as 1/2. We can also write it like this. Okay. Now divide it into equal parts is as many ways as you can. So हम इसको कैसे divide कर सकते हैं? हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड इट लाइक दिस. ओके, वी कैन डिवाइड इट लाइक दिस. वी कैन डिवाइड इट लाइक दिस ऑल्सो. हेयर ऑल्सो दे आर शोइंग. ओके, लाइक दिस, लाइक स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लोपिंग लाइन. ओके, राइट स्लोपिंग लाइन, लेफ्ट स्लोपिंग लाइन, ऐसे भी डिवाइड होता है. बट इट शुड बी इन इक्वल पार्ट. ईच पार्ट इज हाफ. ये देखो सेम है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कम ज्यादा नहीं है. दिस वे. Now exercise 1. Color half of each shape. अब इसमें हमें कलर करना है सबका हाफ. ओके, एज आई डिड. अंडरस्टूड? हाफ हाफ ही करना है, फुल नहीं. 1/3. So half is 1/2. It is called half. इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ. Now 1/3. इसको 1/3, 1/3 नहीं, 1/3 को हम क्या बोलेंगे? 1/3. ओके, जब किसी चीज के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, व्हेन वी डिवाइड समथिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, सो ईच पार्ट विल बी
we'll call as 1/3. Take a strip of paper. We have taken. Try to cut into 3 equal parts. Yes, we have divided. Each part is called 1/3. 1/3 is written as like this. Look at these shapes. Write down in the box what part is being shaded. The first one is done for you. अब हमें इसमें बताना, उन्होंने हाफ भी दी है, 1/3 भी दी है. इसको 1/3 कोई नहीं बोलेगा, 1/3 भी हो सकता है और 1/3. The correct pronunciation of it is 1/3. So here it is a rectangle. So they have divided it into, yes, 3 parts. So one part they have covered, so it will be written as 1/3 क्योंकि हमें 1 part उसका कलर किया है. इसका हाफ पार्ट हमने कलर किया है 1/3. इसका भी 1 है, 3 parts हैं तो 1/3. Here also color 1 is 1, but it is divided into 2 equal parts, so it will be half. It is also half. Okay, turn the page. Now quarter. See, जो 1/4 होता है that is called quarter. 1/4. Okay, it is 1/4. ये क्या होता है? क्वार्टर. इसको क्या बोलते हैं हम? क्वार्टर पार्ट में डिवाइड करते हैं. द केक हैज, जैसे पिज्जा आता है ना, पिज्जा कैसे डिवाइड होता है? क्वार्टर में, 4 pieces. ओके, दिस केक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 equal parts. 1 2 3 4. ओके, वासु टेक्स 1 part. वासु ने 1 part ले लिया. ही हैज टेकन अ क्वार्टर ऑफ द केक. सो कितना पार्ट लिया उसने? क्वार्टर उसने ले लिया. 1/4 उसने ले लिया. तो क्वार्टर पार्ट ही हैज टेकन. Why you divide something into 4 equal part? When you divide something into 4 equal part, each part is called quarter or 1/4. Okay, and quarter or 1/4 is written as like this. Strip of paper they have taken, folded it into 2 half. ये कर लिया. अब जी ये वाला पार्ट है, 2 parts हैं, इसको अब और डिवाइड कर दो तो ये 1 2 3 4 हो गए ना. 1/4 1/4 1/4 1/4. You have divided 1 into 4 equal parts. Each part is quarter. Cut out each part. See, 1/4 1/4 1/4 1/4. You have 4 equal parts or 4 quarters. 4 equal parts भी बोल सकते हैं और 4 quarter भी बोल सकते हैं. Okay? Put the 4 quarters together. Did you get the whole? Yes. अगर हम ये पार्ट इकट्ठे कर देंगे तो हमारा होल हो जाएगा ना पूरा. इतनी स्ट्रिप हो गई हमारी सेम. ओके, सो दिस इज होल एंड दिस इज 1/4. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच हैज बीन शेडेड. अब यहां पे कौन सी फ्रैक्शन कैसे हुई है? लाइक 1 2 3 4. ओके, 4 हम यहां लिखेंगे. अब कितना पार्ट उसका शेड किए? 1. तो इट इज 1/4, 4th और क्वार्टर. 1/4 और क्वार्टर. Here how many are parts? 3. Colored कितने? 1. तो it is 1/3. 1/3 नहीं बोलेंगे, 1/3. 1 2 3 4 4 parts है. तो colored कितने? 1. तो it is 1/4 और quarter. Okay, this you will do on your own. Fraction. When one whole is divided into 2 equal parts, it is called half. Remember this thing in your mind. 2 equal parts is half. 3 equal parts 1/3. 4 equal parts is quarter. Half, 1/3, quarter are called fractions. They are called fraction. Okay? और अगर चाहे हम हाफ जो किया उसको भी मिला देंगे तो भी होल हो जाएगा. 1/3 को भी ज्वाइन कर देंगे तो भी होल हो जाएगा. एंड क्वार्टर को भी ज्वाइन कर देंगे तो भी होल पीस वी विल गेट. ओके, यू कैन ट्राई इट एट होम. Now next is what fraction of each has been shaded. This is same. 1 2 3 part है. Shade कितना है? 1. Okay, here 1 2 3 4 parts है. Shaded कितने? 1. So this you can do. I know that. चाहे center वाला है. Parts कितने? 3. Colored कितने? 1. It is 1/3. Okay, very easy. Shade to show the fraction written below each figure.
Now here they have written the fraction and they have divided the whole into according to that, like 1/4 they have divided the whole into quarter. So हमें इसका 1 part color करना है, तो we can color it any. हम इसका कोई भी एक part color कर सकते हैं. So I am doing it here. You can do anywhere. Okay. So here half, तो half हम color करेंगे. Okay. डन. अब इसका हाफ करना है, क्योंकि 4 है ये, तो इसका हाफ क्या होगा, हम ये वैसे होगा, इसको हाफ को कलर करना है हमें. ओके. सो दिस, ये हमने हाफ कर दिया कलर. अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी. इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम. Okay beta, now it's your final exams. Do study hard. कोई भी problem आती है, any time you can call, for any query, for any doubt, any time you can call. Okay, no hesitation, and I don't have any problem in that if you will call me to solve your query. Okay, this is all for today. Now we have done with the syllabus. Now only practice we will do. Bye bye.